Today we will start new topic. This is related to solving linear systems. That you have a system of system of linear equations. System means that you have more than one equation. Let us take a two cross two system. That is, you have two equations and two unknown. And unknown are x1 and x2. So first equation is 2x1 plus x2 equals to 1, and second is x1 plus x2 equals to 3. So this is a linear system, linear in x1 and x2. You don't have multiplication of x1 x2 and don't have higher power. So this is a linear system of equation. So you can say this is a system in x1 and x2. So how you solve this equation, you know from your high school that you eliminate one variable and let us write, for example, just subtract. Okay, so if you subtract these two equations and you can see x2 will cancel out, so you have x1 equals to minus 3 plus 1 minus 2, and you can fit value of x1 in any equation. Let us take second equation. So second is x2 is 3 minus x1, so you can write 3 minus 2, so 5. So what I say that x1 x2, which is 5 minus 2, so this is a solution. So solution means that this 5 and minus 2, this satisfy both of the equations. And in this topic, we talk about such kind of system. Of course, we will take 3 cross 3 system and higher order system. 3 cross 3 means 3 equation, 3 unknown, and you can write MATLAB code that the technique you will develop here. So I am writing in general, I am taking a n cross n system. N cross n means you have n equation in n unknown. Let us write these variable as x1, x2, and up to xn. So first equation I am writing a1, 1. So 1, 1 means I am writing all coefficient as a. So you have to specify first one. I'm writing this is 1 and 1. So first one is for first row and second is for column. So a11 means first row first column, then a12 coefficient. जैसे यहाँ पे था 2 क्रॉस 2 में a11 क्या है 2 and a12 is 1. ओके कोफिशिएंट जो है, और सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड रो है, तो a21 which is 1, then a22 which is 2. Okay, so and so on. So last row होगा a1n first row nth column and equals to b1, like here 1, b1 is 1. Then second equation a21 x1 plus a22 x2. Second row first index will be 2 and second column will change 1 2 3 up to n equals to b2 and so on. And in general you can write ith equation. For programming purpose we will write ith equation as ai1, then ai2, ith row I, and ain xn equals to b of I, and so on. And last equation would be nth row an1 x1 plus an2 x2 dot dot ann xn equals to b of n. So in that way you can write a system of linear equation where ai's are all coefficient. और अगर आप मैटलैब में लिखोगे तो मैटलैब में यहाँ आपने ए आई जे लिखा है, मैटलैब विल ट्रीट इट एज ए आई कॉमा जे.
I first label is for row and second is for column. So Aij means ith row, jth column. And here like A2n means a second row, nth column. And variables are x1, x2, xn. So this is a linear system of equations in n unknown. And these bi's are right hand side. Like in example, we had 1, 3. So b1 is 1 and b2 is 3. So in general, you can write system in this form. Also, we can write this system in matrix form. That will be useful. So what is matrix form of this system? Just put it in a matrix form. So firstly, write coefficients. First A11, A12, A1n, then second A21, A22, A2n, and just I'm writing here last one, AN1, AN2, ANN. So these are coefficient, and if you put columns in unknown in the column, so x1, x2, xn, and right hand side is a column vector b1, b2, bn. And you know how to multiply matrices. कैसे मल्टीप्लाई करोगे a11 x1 फर्स्ट a12 x2 फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आपको क्या दे देगा ये फर्स्ट equals to b1. If you have two matrix equal, then first entry would be equal to first entry. So if you multiply, you will get first row. Then you multiply second a21 x1, you will get second row, and so on equals to b2. So this is the matrix form of the system. And if I write coefficient matrix as A, so I can write A and this column vector as X and equals to that right hand side B. So I can write in short form. So what is solution? Solution means find x1, x2, xn, and or in other words, find x. What is x? X is a column vector. So if A inverse is possible, then multiply A inverse on both sides. Okay, so and A inverse A is identity, and you can write solution as A inverse B, provided A inverse is possible, but or you can say determinant of A is non-zero or A is non-singular. But you know, finding A inverse is not easy task. That is very difficult task. You find to find A inverse. Firstly, you need to find adjoint, etc. But you can see from motivational example, we find the solution by just eliminating the variables coefficients, you can say, but we have not find any inverse, and these are in fact direct methods. Okay, so what we do here, we will solve the system without finding a inverse, and these methods are not iterative. Like हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया, आपने इटरेट तो कुछ नहीं किया, जस्ट आपने रो कॉलम को प्लस माइनस किया है, वो आप कर सकते हो. That's why these are called direct method. So you don't add any initial guess. And of course, we will also study iterative method in next chapter. So firstly, so I am studying here direct. I'll show you direct methods. And we will study that that is known as Gauss elimination. So these are what the direct methods, these methods solve the system without calculating A inverse. Okay, so if A inverse is possible, so this is the solution. So compute A inverse, multiply with B. But finding of A inverse is not easy task. So if you have a large system, 3 cross 3, 4 cross 4, then finding A inverse is not always possible. So we will solve the system by using these direct method, and these methods, so they are based on
based on elementary row operations, and these operations you used in your high school to find solution of some system. But here we will write those method in a systematic way so that you can write a MATLAB program. Of course, these are numerical method. So I am taking first an example, then we will move to general procedure. So there is no formula, nothing, no iterations, nothing. So you just eliminate the variables. So let us take one example. For example, solve the system using Gauss elimination. We also say Gauss or Gaussian elimination. So we have a system 3 cross 3. For simplicity, I will take example of 3 cross 3 or 2 cross 2 depending on the situation. Then second equation is x1 minus 3x2 plus 2x3 equals to 2. Then 2x1 minus x2 plus x3 equals to 3. So this is a 3 cross 3 system. We will put this system in matrix form. So what we do here, करना हमने वही है कि let us say this is 3. With the help of this 3, make with 0 here. अगर ये 0 बन गए तो फिर क्या होगा, ये हट गए यहाँ से. Then you will take this 2 cross 2 system. Then with the help of this one, make 0 here. Then you got x3. ठीक है, जो हमने 2 क्रॉस 2 बिगिनिंग में किया था वही हम यहाँ करेंगे 3 क्रॉस 3 में. सो फर्स्टली, बट वी विल डू इट इन ए सिस्टेमेटिक वे, एंड दैट सिस्टेमेटिक वे इज नॉन गॉस एलिमिनेशन. Of course, also you will write a MATLAB program for this. So firstly, I am putting this system in matrix form. So what you got matrix form? So this is 3, 2, minus 1, 1, minus 3, 2, 2, minus 1, 1. Then 1, 2, 3. और यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर था फर्स्ट में, अगर आपने ये माइनस किया है, लेट अस से कि आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों साइड ही करोगे आप, है ना. इक्वेशन है तो इक्वल है, तो यू हैव टू डू बोथ, whatever you do, you have to do on both sides. So I am writing a matrix that is known as augmented matrix, or you can say this is a auxiliary matrix. So what is this matrix? So this is coefficient matrix 1 minus 3 2 2 minus 1 1 plus right hand side, and also write right hand side here 1 2 3. So what is augmented matrix? So this is A together with B, right hand side. तो फर्स्टली आपने इसमें जाना 3 पे, इट शुड बी नॉन जीरो सिंस A11 is non-zero. So we eliminate A21 and A31. अगर ये जीरो होता फिर तो कोई प्रॉब्लम, फिर तो आगे हम डिवाइड करेंगे इससे एक्चुअली, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए. सो विद द हेल्प ऑफ 3 यू विल मेक जीरो हियर. अब जीरो हम कैसे करेंगे? फर्स्टली आई राइट मल्टीप्लायर्स आर. अब फर्स्ट आपने इसको डिलीट करना है, तो ये पोजीशन कौन सी है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो उसी वे में लिखूंगा मैं M21.
ठीक है, 1 को डिलीट करना है 3 से, सो 3 से डिवाइड कर दो यानी कि इसको। ओके, सो 3 को इससे और 3 को 2 से भी, 2 को भी डिलीट करना है ना आपने, इसको भी डिलीट करना है। तो ये पोजीशन कौन सी है, दैट इज m मल्टीप्लायर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2/3, इनको मल्टीप्लायर बोलते हैं। दे विल हैव a special role that I will tell you later on. Now let us put a label here. Let us say this is first equation, or you can write R1, R2, R3. This is second row, this is third row. So what I do, जो second row है, I will write it as second minus multiplier जो है इसका 1/3 first. Then I replace third row as थर्ड माइनस जो मल्टीप्लायर था इसका 2/3 टाइम्स फर्स्ट, यानी कि आपने फर्स्ट से डिलीट करना है, फर्स्ट से। तो पहले जो आपने m निकाला है इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट से, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर दो। फिर सेम थर्ड में, थर्ड माइनस फर्स्ट से 2/3 मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, जो नया मैट्रिक्स बनेगा इक्विवेलेंट में लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, अभी बार बार मैं बीच में स्पेस नहीं डालूंगा। अंडरस्टूड दैट दिस इज राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो E2 पहले 1 था, यहाँ पे 1 माइनस 1/3, ऊपर वाली एंट्री कौन सी है 3, तो ऑटोमेटिकली 0 बन गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0। अगली एंट्री क्या आएगी, -3 था, पहले -3 था ये, सो -3 माइनस 1/3, उसके ऊपर वाली एंट्री 2। अगला यहाँ पे 2 था, 2 माइनस 1/3 ऊपर -1, और 1 की जगह यहाँ पे, सॉरी यहाँ 2 था, 2 माइनस 1/3 उसके ऊपर 1 है। सेम थर्ड रो में यहाँ पे 2 था, तो 2 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 कैंसिल आउट, 2 माइनस 2 यू विल गेट 0। नेक्स्ट एंट्री -1 माइनस 2/3, ये 2/3, और फर्स्ट के ऊपर वाली जस्ट एंट्री उसकी 2। फिर नेक्स्ट एंट्री 1 माइनस 2/3, वहां पे -1 है, और 3 माइनस 2/3 1। Okay, so you can say this procedure, if you do this you will get automatically 0 here। बनाना तो 0 ही था, बट हमने सिस्टमेटिक वे से करेंगे और इसको हम प्रोग्राम भी लिख लेंगे इसका, ठीक है। सो इन नेक्स्ट आई एम सिंप्लीफाइंग इट। क्लियर है यहाँ तक? पहले मल्टीप्लायर निकाल लो जिसको डिलीट करना है, 1 को डिलीट करना है 3 से 1/3, 2 को डिलीट करना है किससे, 3 से, पहले इससे डिलीट करना है 3 से 2/3। तो फिर सेकंड को क्या लिखना है, सेकंड माइनस जो मल्टीप्लायर है 1/3 फर्स्ट, और थर्ड को क्या लिखना है, थर्ड माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स फर्स्ट, फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट, यू कैन से दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज फर्स्ट स्टेज। Okay, so in next I am going to simplify this entry. So जो simplify होके बनेगा entry, first as it is 3 2 minus 1 1, you got 0 0 here, -11/3, just simplify those previous entry, 7/3 5/3 5/3 7/3। Okay, now second stage। अब आप डायगोनल पे ये फर्स्ट कॉलम वाइज जाना है, फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है 0। नाउ गो टू सेकंड, डायगोनल पे इधर आ जाना अपने, यहाँ पे डायगोनल पे, कम हियर। सो विद द हेल्प ऑफ -11/3 मेक 0 हियर, इसको 0 कर देना आपने, एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर। कैसे करोगे, अगेन राइट मल्टीप्लायर, सो मल्टीप्लायर इज, अब जिसको डिलीट करना है वो थर्ड रो सेकंड कॉलम है,
M32 किसको डिलीट करना है? -7/3 किससे? -11/3 से. So you got 7/11. So this is first, this is second, this is third. So write third row as, अब थर्ड को लिखना है. थर्ड को कैसे लिखना है? थर्ड माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स सेकंड. अब सेकंड यूज होगा, पहले फर्स्ट था यहाँ पे. तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट दो एज इट इज, जस्ट फिट फर्स्ट दोनों को ऐसे लिख दो सेम. जीरो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7/3 था पहले, -7/11, ऊपर -11/3. एंड यू कैन चेक 11 cancel, minus minus plus, 7/3 plus 7/, so this will be 0. Next entry 5/3 minus 7/11, ऊपर 7/3. थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं. यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5/3, और यहाँ पे आएगा 7/3 था पहले. दिस इज 7/3 minus 7/11, ऊपर वाली एंट्री 5/3. So just simplify it in next. 3, 2, -1, 1, 0, -11/3, first two as it is. Just simplify it. So you got 0, 0 here. Okay, next entry, just simplify this expression. We are not doing rounding chopping here, so just P/Q, LCM लेके कर लो simplify. 2/11. This is 14/11. And you can see from the beginning, this is left hand side and this is right hand side. Okay, so 3 × 3 है तो हमने 2 बार करना है. So now you got your solution. Solution कैसे दिखेगा अब आपको? अगर आप दोबारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो फर्स्ट तो सेम है. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x1 + 2x2 - x3 = 1, दिस वन. बट अगर सेकंड देखोगे तो ये 0x1 -11/3x2 + 7/3x3 = 5/3. और थर्ड देखोगे तो 0x1 0x2 2/11x3 = 14/11. ओके, सो वी राइट इन रिवर्स ऑर्डर. तो थर्ड को पहले लिखते हैं, थर्ड वाले को. तो थर्ड इक्वेशन का ये x3 का कोफिशिएंट था ना, और ये राइट हैंड साइड है. इसको हम बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं? बैक सब्स्टिट्यूशन. So what we do? We write first, third, last equation. Last equation is 2/11 x3 = 14/11. So 11 cancel, x3 is 7. अब सेकंड इक्वेशन लिखिए. सेकंड इक्वेशन 11/3x2 + 7/3x3 = 5/3. ओके, सेकंड इक्वेशन -11/3x2 + 7/3 x3 अब कंप्यूट कर लिया आपने, 7 फिट कर दो, = 5/3. यहाँ से x2 निकाल लो प्लस माइनस करके, x2 will be 4. फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट तो सेम ही है. 3x1 + 2x2, x2 is 4, minus x3 is 7 = 1. तो यहाँ से x1 निकाल लो. x1 क्या मिल गया आपको? 8 - 1 1 0. So this is the solution. So what is the solution? Solution is x1, x2, x3. So what is x1? 0, x2 is 4, x3 is 7. So this is my solution of the system. I hope procedure is clear. Any doubt? ये वाला मेथड वापस बता दो, बैक सब्स्टिट्यूशन वाला.
Okay, so this was the example, and this method is very very simple, and topic is very easy, you can say. No iteration, no convergence, nothing need. You don't need to study anything. These are exact method. You will get your answer provided. अब आप चेक कर सकते हो, मैंने एग्जांपल को किया है, मैंने 14/11, ये तो मैनुअली कर सकते हो ना, 2/11 बाई हैंड यू कैन डू, P/Q फॉर्म लिखते हो तो ये एग्जैक्ट है, सारे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको, यू कैन चेक, दिस इज एग्जैक्ट आंसर. बट इफ यू पुट दिस सिस्टम इन मैटलैब और इन एनी कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आप 2/11 कैसे लिखोगे? 2/11 लिखोगे तो वो डेसिमल में लिखेगा उसको. डेसिमल में लिखोगे, यू हैव टू कट ए नंबर, राउंडिंग चॉपिंग करोगे, तो यहाँ पे एरर आ सकता है, बट दैट इज ड्यू टू ओनली राउंडिंग एंड चॉपिंग. And if you use long format, you will get correct answer. Okay, इनको direct method भी बोलते हैं और exact methods भी बोलते हैं इनको. Okay, so now I'm writing general procedure. You can say this is pseudo code that you implement in MATLAB. Okay, general procedure or pseudo code जो हमने 3x3 में किया है, that I can write for n×n. So so what is the matrix form of system that I did write already? Matrix form of this system is A11, A12, A1n, then A21, A22, A2n. Then I am writing ith row, AI1, AI2, AIN, and so on. Then last row, AN1, AN2, ANN. So this is, फिर xi लिखोगे, फिर xn लिखोगे, and right hand side is b1, b2, bi, and bn. Okay, so this is the matrix form of the system of n equation in n unknown. So firstly, you proceed like you did in example. Firstly, we write augmented matrix, means matrix plus right hand side. So what is augmented matrix? That is matrix A plus right hand side. So A11, A12, and so on. Ith row AI1, AI2. Okay. Then nth AN1, AN2. And here you can put a distinction, separation if you want. So this is B1, then BI, then this is BN. You can put vertical dot if you want, BI, this is BI. Okay, and put a label. This is first equation, this is ith equation, and this is nth equation. So firstly, you see here, let if A11 is non-zero, then we eliminate x1 from first column, or you can say from second, third, and nth row. So for this we take multiplier. We take multiplier, that was mi1. सेकंड लिखा था ना हमने, m21, m31, तो 1 1 रहेगा, रो के अकॉर्डिंग वेरी करेगा i, i2, i3, i4. So that was i1 divided by a11 for i2, 3 up to n. और फिर आपने ith रो को क्या लिखा था,
सेकंड रो को क्या लिखा था, सेकंड माइनस मल्टीप्लायर टाइम्स फर्स्ट, ये किया था हमने हर एक रो में, और यही आप मैटलैब में लिखोगे, और राइट हैंड साइड को भी लिखोगे बी आई को। मैं अच्छा ई आप इसको कह सकते हो फर्स्ट इधर वाले को, और बी राइट हैंड साइड को सेम बी आई को लिखोगे आप। बी आई को क्या लिखोगे, बी आई माइनस एम आई वन बी वन। So this will delete x1 from these rows। तो फिर आपको यहाँ फर्स्ट कॉलम में सारे जीरोज बन जाते हैं, जैसे एग्जांपल में किया था हमने। फिर इसी को आपने रिपीट करते रहना है, पहले फर्स्ट कॉलम में गए, फिर सेकंड कॉलम में गए, थर्ड में, एंड सो ऑन। ओके, सो वी रिपीट द प्रोसीजर। for columns second, third and n minus 1। 3 क्रॉस 3 था तो 2 बार किया, n क्रॉस n होगा तो एक कम, n माइनस 1 टाइम। और परफॉर्म क्या करोगे आप, रिपीट कैसे करोगे, यू विल राइट ith इक्वेशन एज ith माइनस मल्टीप्लायर, दैट इज a ij डिवाइड बाई a jj मल्टीप्लायर टाइम्स ej for each I running from j plus 1। जैसे आपने इसका मीनिंग क्या है कि J1 है तो सेकंड रो को चेंज किया ना, सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स। सेकंड स्टेज पे J2 है तो उससे अगले वाले, तो आई रो क्या होंगी उससे अगले, तो J से अगला क्या होगा, J plus 1 J plus 2 up to n। So this will delete xi in each row below the ith values। For I equals to 1 2 up to n minus 1। जो सिक्वेंशियल प्रोसीजर है आपने फर्स्ट पे लगाया सेम आगे रिपीट करना है। And at the end you can see from the example, you repeat the procedure and at the end you got a matrix in which non-zero entry are on diagonal and are on upper side। देखो ना, डायगोनल के बिलो क्या है, जीरोस हैं सारा, तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Okay, so after doing these operations, you get an upper triangular matrix of the form। अब मैं एंट्री को उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, A11 ये तो वही है, वैसे फर्स्ट रो चेंज नहीं होता, सेकंड में यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे A22 विल बी न्यू A22, then A2n and so on, and last row will be 0 0 and you will get only A and n here। So now you do back substitution, so solving last equation, or you can say solving nth equation, gives you last equation ann xn equals to bnn। तो आपको xn मिल गया, bn डिवाइड बाई ann। फिर इसके जो ऊपर वाली इक्वेशन होगी, इन द सिमिलर वे सॉल्विंग n minus 1 equation, n minus 1th equation,
अब n-1 इसके ऊपर वाली इक्वेशन क्या होगी, उसमें डायगोनल होगा n-1 रो होगा, कॉलम n-1 xn-1, दो ही एंट्री होंगी इसमें, लास्ट वाले में एक है, ऊपर वाले में दो होंगे, तो यही होंगी n-1 का कॉफिशिएंट और xn का कॉफिशिएंट इक्वल्स टू b ऑफ n-1। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, xn-1 क्या होगा, bn-1 इसको इधर ले जाओ, an-1 n-1 xn-1 डिवाइड बाई an-1 सॉरी इसको इधर लेके जाना, तो an-1 xn को इधर लेके जाओगे और an से डिवाइड कर दोगे, ये सॉल्व फॉर xn-1, सो दिस विल बी हियर। अब ये आपने कंटिन्यू करते रहना है, तो अब कंटिन्यू कैसे करूंगा, मैं ith इक्वेशन लिख लेता हूँ, ith, तो वो जनरल प्रोसीजर बन जाएगा। कैन यू लेट मी नो व्हाट विल बी ith इक्वेशन। अब ith इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट में क्या है a11, सेकंड में 2 2, तो ith में क्या होगा ai xi, i में यही होगा, अगला कॉलम ai i+1 xi+1 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा ain xn इक्वल्स टू b ऑफ i। तो xi कंप्यूट करना है, सो टेक एवरीथिंग ऑन राइट हैंड साइड, सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये सारे इधर चले जाएंगे, ai+1, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, शॉर्ट में कैसे लिखोगे, xi कंप्यूट करना है आपने, बाकी सबको सम फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉलम वेरी कर रहे हैं i+1 से लेके लास्ट तक, सो aij xj इक्वल्स टू b ऑफ i। आप इन टर्म्स को ये लिख सकते हो, कॉलम वेरी कर रहे हैं i+1 से लेके n, तो j लगा दो, j रनिंग फ्रॉम i+1 टू n, इसको राइट में लेके जाके माइनस करोगे, फिर ai से डिवाइड कर दोगे, सो यू गेट xi। सो सॉल्व फॉर xi, so this will give you xi, which is b of I minus j i+1 to n aij xj division a of I. That's why I said in the beginning aii, a11, a22, these must be non-zero as you are dividing with aii. So this will give you ai, और इसी लाइन को आप मैटलैब में लिख दोगे, x of I equals to b of I minus this sum, ठीक है। और j है जो कॉलम, आप बैकवर्ड जाओगे, रिकर्सिवली जाओगे, कि पहले आपको xn मिलेगा, वो तो डायरेक्ट मिल जाता है, फिर आपको xi इससे मिलेंगे आपको, फॉर कॉलम्स जो होंगे वो n-1 से लेके रिवर्स डायरेक्शन में जाके फर्स्ट तक जाओगे आप, एंड सो ऑन। ओके, so this is a pseudo code or MATLAB code of this Gauss elimination method. Any doubt in this? देखो जो हमने एग्जांपल में किया था, if you remember the example, we have written augmented matrix, then you divide with a11, then you write this a2 e3 as first stage, second stage पे आप यहाँ पे आ गए, below you made 0, and same procedure I am writing here, so I am starting with a11, so firstly you will divide with a11 and you change each row below 1, so second and onwards, okay, सबको चेंज कर दोगे, राइट हैंड साइड को भी चेंज करोगे, एंड यू विल गेट 0 इन फर्स्ट कॉलम, फिर रिपीट कर देना है आप सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। यू कंप्यूट मल्टीप्लायर,
you replace ith row with ith minus multiply times ej, जो उसके just ऊपर वाली रो है. And after this you will get upper triangular matrix जिसमें diagonal के below zeros हैं सारे. So यहाँ भी zeros हैं इससे पहले. Okay, so all entry below the diagonal they are zero. So this matrix is known as upper triangular matrix. And at the end, if you see this matrix, this is the coefficient of a xn. So a n n xn equals to bn. So just you got xn. फिर इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाला लिख लो एक, उसमें दो एंट्री होंगी n-1 और n वाली, वो लिख दो. ठीक है, रो तो n-1 रहेगा, कॉलम चेंज होंगे n-1 और n, वो लिख दो. एंड सॉल्व फॉर xn-1. तो n-1 ऑनवर्ड मैंने क्या लिख दिया, ith इक्वेशन लिख दिया. i वेरी करेगा. ओके, i वेरी करेगा रिवर्स डायरेक्शन में. यहाँ सॉरी, i वेरी करेगा फॉर, गलत लिखा है मैंने, रोज के लिए. फॉर ईच, फॉर रोज रिकर्सिव वाली जाओगे n-1 से लेके एंड सो ऑन. So you will go in the reverse direction and you will get x of I. ठीक है, तो i थ्रो लिखा, i थ्रो में पहला इंडेक्स i होगा, कॉलम i होगा, फिर कॉलम वेरी करेंगे. रो तो i रहेगा पहला, i+1, i+2, i n तक. तो मैंने सारे कॉलम i से आगे i+1 से n सम फॉर्म में लिख लिया. सो सॉल्व फॉर i, xi कंप्यूट कर लो, सम को राइट में ले जाओ, ai से डिवाइड कर दो. And you will do for each row n-1 से शुरू करोगे, n-2 and so on. Okay, so this is the general procedure or pseudo code of MATLAB. And this method is quite simple, just based on elementary row elimination. But we don't eliminate in a zigzag manner. We do calculation in a systematic manner so that you can make a MATLAB program. And you can check here. So you are dividing with the diagonal entry a n n a I I. So these entries must be non-zero. And in next class we will see what will happen if these diagonal entry a I I, if they are small or they become zero at one stage, then what we will do. That we will study in next class. If you have any query, then let me know. No? Okay, so then I'll stop now.